नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन भी हंगामा, एसआईआर पर चर्चा के लिए सहमति। गुजरात के अहमदाबाद के वज्रेश्वरी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, कई परिवार प्रभावित। और वडोदरा के जीबी स्कूल में छात्र को आई चोट, स्कूल प्रबंधन पर सवाल। संसद में 2 दिन से जारी हंगामे के बीच अब सहमति बन गई है। 8 और 9 दिसंबर को वंदे मातरम और चुनावी सुधारों पर 10-10 घंटे की चर्चा होगी। संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामे के बीच सरकार और विपक्ष में एसआईआर पर चर्चा के लिए सहमति बन गई है। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही उन्होंने कहा 1 दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा करा रही है। संसद सत्र के पहले 2 दिन एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर हंगामा हुआ। विपक्ष आज भी एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपनी मीटिंग रूम में बुलाया। यहां सहमति बनी कि कल से सदन बिना किसी हंगामे के सुचारू रूप से चलेगा। गुजरात के अहमदाबाद के नारोल नरोड़ा हाईवे पर स्थित वज्रेश्वरी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। अहमदाबाद के नारोल नरोड़ा हाईवे पर स्थित विराटनगर ब्रिज के पास वज्रेश्वरी कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग को फायर ब्रिगेड ने लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू में कर लिया है। फिलहाल कूलिंग की प्रक्रिया जारी है। आग बुझाने के लिए 50 फोम कैनिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। वज्रेश्वरी कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों में शुरू हुई आग धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे 2 मंजिला बिल्डिंग की 11 दुकानों तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स के पीछे केवल 50 फीट की दूरी पर श्री ओम सोसाइटी स्थित है, जिसमें 43 मकान है। इस सोसाइटी का मुख्य दरवाजा कॉम्प्लेक्स के भीतर से होकर ही निकलता है। जो हमारा टीम पहुंचा, फर्स्ट टीम पहुंचा है और उसके बाद जो फायर फाइटिंग हुई और इतना फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं फायर के, तो इसमें प्रथम दृष्टि लग रहा है कि ऑयल फायर से स्टार्ट हुआ। ये आप फुटप्रिंट देख सकते हैं कि उसमें ऑयल फायर था। ऑयल फायर कारण जो आसपास की दुकानें थी उसमें फायर फैली है, हीट ज़्यादा था। तो जो कपड़े की दुकान है जहाँ पे गारमेंट से काम चलते हैं उसमें फायर फैली है और जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक इसका हीट का इम्प्रेशन गया है। इस पूरे वाक़ये में कहीं भी किसी दुर्घटना की जान की हानि का ऐसे तो अभी तक नहीं मिला है और बाकी कूलिंग का काम भी चल रहा है। हम बात करें यहाँ पे जो शॉप थी, शॉप अभी बंद थी तो उसमें पर्सन्स उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो हम लोग की 13 व्हीकल्स, फायर फाइटिंग व्हीकल्स और तकरीबन 60 जवान यहाँ पे उपलब्ध हैं जो फायर फाइटिंग कूलिंग का काम चल रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे फोम का यूज़ किया गया है। जब भी हम बात करते हैं ऑयल फायर की तो उसमें पानी डालते हैं तो कूलिंग होता है। यदि हमको फायर फाइटिंग करनी है तो उसके लिए फोम यूज़ किया जाता है। मेरे पीछे आप देखें कि सैंड की, रेत की बोरियां लगा के इसको रिटेन किया गया था जिससे फायर फाइटिंग इजीली हो पाए और कूलिंग के लिए अभी वाटर का इस्तेमाल चल रहा है। गुजरात के वडोदरा के जीबी स्कूल में एक छात्र को आंख के पास गंभीर चोट लग गई, जिसके चलते उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वडोदरा के अकोटा स्थित जीबी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कक्षा 9 का छात्र हर्ष राठौड़ घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक इंटरवल से ठीक पहले क्लासरूम में कुछ छात्र आपस में मस्ती कर रहे थे, जिस दौरान छात्र की आंखों में पैंजा लगा। इस मामले छात्र के पिता ने बच्चों के खिलाफ शिकायत करने से तो इनकार किया, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर नाराजगी व्यक्त की है। ये विद्युतनगर कोलानी अंदर जीबी स्कूल है, एनी अंदर 9मा ધોરણમાં ભણે છે। એના એ બરાબર 12 ને 5 જ્યારે 12 ને 10 સ્કૂલ છૂટવાના ટાઈમે એમના જે મેડમ હતા હોવા છતાં છોકરાઓ મસ્તી કરતા, ક્લાસ ટીચર જે હતા, જે મેડમ ક્લાસ ટીચર જ હતા, એમણે એટલું કહેવું છે કે મસ્તી શું કામ કરો છો આ છે, તો છતાં મેડમે કશું કંઈ કીધું નહીં। અને ફૂટેજ ચાલુ છે તો ઓફિસની અંદર બેઠા બેઠા શું જોવે છે આ લોકો? જે
પ્રિન્સિપાલ ઓફિસમાં ઝઘડો બગડો નહીં, છોકરા મસ્તીની અંદર કરતા હતા. તો એમને કહેવાની છે ફરજ ટીચરને કે આ શું કામ કરો છો, કોઈકને વાગી જશે. તો છતાં કંઈ બેદરકારી લીધી. ફૂટેજની અંદર બધું બતાવે છે, ત્યાં હું જોઈને આવ્યો છું. ને મારા છોકરાનો કંઈ વાક નથી. જે છોકરાઓ તો છેલ્લી બેન્ચીસ ને પહેલી બેન્ચીસ પર, તો એની અંદર ક્લાસ ટીચરને ખબર તો પડી જાય ને કે આ શું કરે છે. એ નીચે મોઢું નાખીને બેઠી હતી, બરાબર. તો શું કરે, આ છોકરાઓ મસ્તી કરતા હતા, એના ફૂટેજ બધા છે. અને મારા છોકરાને છેલ્લી કાગળના ડૂચા માર્યા, પછી એ ભાઈ એ બોલપેન મારી, એ સીધી મારા છોકરાના જમણા આંખ પર પડી ગઈ. કંઈ એ છે નહીં અમારે. તો મારે ગુજરાત સરકારને એટલું કહેવું છે કે ઓલ ઇન્ડિયા, ઓલ ગુજરાતની અંદર કે આવા બનાવ ના બને અને છોકરાના મા બાપ આ તકેસ્થિત રહે, એમ કે સ્કૂલ, દરેક સ્કૂલની અંદર આવું ના થવું જોઈએ. હા, તો હું છું, જીબીની અંદર છું, મારી સ્કૂલનો જીબી જ છે, હું એવું નહીં માનતો, પણ આ બનાવ બીજી વખતે દરેક સ્કૂલની અંદર ના બનવો જોઈએ, ઓલ ગુજરાતની અંદર. અને સરકારને નિવેદન કરું છું કે દરેક સ્કૂલની અંદર કે આ માર્ગદર્શન આપે કે છોકરાઓ આવી રીતના કરે છે એ થોડુંક દૂર કરે. વિદ્યુત બોર્ડ વિદ્યાલય ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં 9મા ધોરણમાં છોકરા ભણતો હતો અને કાલે છૂટવાના ટાઈમે એટલે કે 12:10 ત્યારે ક્લાસરૂમમાં મેડમ નોટબુક ચેક કરી રહ્યા હતા. એ સમયે આ પહેલી બેન્ચીસ પર બેઠેલા છોકરાએ છેલ્લી બેન્ચીસ પર બેઠેલા એક છોકરાને પેન ફેંકી અને આ છોકરાને આંખમાં વાગી ગઈ. એટલે તરત જ અમે એમના પેરેન્ટ્સને ફોન કર્યો. પેરેન્ટ્સ આવ્યા અને એમને દવાખાને દાખલ કર્યો. ચેક કરી રહ્યા હતા, ક્લાસમાં એકદમ શાંત બેઠેલા, પણ છતાંય આ બે છોકરાઓ થોડી તોફાન કરતા હતા. અને આ પહેલા છોકરાએ, પહેલી બેન્ચવાળા છોકરાએ છેલ્લી બેન્ચવાળા છોકરાને આ પેન આપી, એમાં વચ્ચે કોઈને વાગી ગયું. કે આવા પ્રસંગો શાળામાં બને એ યોગ્ય ના કહેવાય. શિસ્તમાં છોકરાઓ ના રહે, યોગ્ય ના કહેવાય. રેગ્યુલર અમે પણ રિસેસ દરમિયાન અમારા 2 ટીચરો લોબીમાં ફરતા હોય છે, 2 ટીચરો ગ્રાઉન્ડ પર પણ રાખીએ છીએ. બધાની ડ્યુટી આપેલી છે કે જેથી આવા પ્રસંગો ના બને. પણ છતાં પણ આવા ઘણીવાર છોકરાઓ ન માનતા, ઘણીવાર કહેવા છતાં પણ આવું કરતા હોય છે. તે બહુ સાહેબ, અમે ઘણીવાર આવું હોય તો અમે છોકરાઓને 6-7 દિવસ માટે રેસ્ટ્રિક્ટેડ કરી દઈએ. બહુ મોટો ગુનો કર્યો હોય તો આપણે એમને શાળામાંથી બીજી શાળામાં બી મૂકી દઈએ, આવું કરીએ છીએ. પણ હવે પનિશમેન્ટ કંઈ યોગ્ય રસ્તો નથી, પણ સમજાવી મનાઈને એમની પાસે કામ કરીએ જેથી આવા પ્રસંગો ના બને. એટલે માટે આજે પણ અમે સવારે શું કર્યું, દરેક ક્લાસની અંદર દરેક ક્લાસ ટીચરે પહેલા પીરિયડની અંદર બધાને સમજાવ્યું કે આટલી નાની નાની વાતો ઘણીવાર કેટલી ગંભીર પરિણામ લેતી હોય છે. એ બધું समझावी અને तूफान ओछू થાય ना થાય એની માટેના અમે वडोदरा महानगर पालिका में फाइलों के गायब होने का मामला गंभीर होता जा रहा है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने सवाल उठाए। वडोदरा महानगर पालिका में फाइलों के गायब होने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग विभागों से अब तक 150 से अधिक फाइलें गायब होने की चर्चा है। हाल ही में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद अतापी वंडरलैंड थीम पार्क की मूल फाइल कमिश्नर के कैंप ऑफिस में नहीं मिली थी, यानी कि फाइल आधिकारिक रूप से गुम थी। पार्क एंड गार्डन विभाग ने इसकी लिखित पुष्टि भी की थी। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने कड़ा विरोध जताया और म्युनिसिपल कमिश्नर से कई मांगे की है। वडोदरा महानगरपालिका एक स्वायत्त संस्था है। तमारा मारा अने जनताना वेराथी चालती आ संस्था है। आ संस्थानी घणी बधी जवाबदारीओ छे, ए जवाबदारीओ निभावता नहीं। माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हेठळ माहिती मांगवामां आई हती। केटली फाइलो अधर से गुम है, त्यारे आज रोड विभागनी 7 फाइलों गायब है, अधर है तेओ पत्र आप्यो छे। बिल्डिंग प्रोजेक्ट शाखानी 1 फाइल गायब है, तेओ पत्र पाठवेल छे। एटले क्यांक ने क्यांक वडोदरा महानगरपालिकामां अधर शब्द एटले के फाइलों गुम थई रही है ते प्रस्थापित थई रह्यो छे। आपणे टूंक समय पहला अतापी वंडरलैंड थीम पार्कनी फाइल माटे सीएम फरियाद दाखल करी हती, त्यारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहेबना केम्प ऑफिसथी अतापी थीम वंडरलैंड पार्कनी फाइल अधर एटले गायब थई थी। तो क्यांक ने क्यांक वडोदरा महानगरपालिका सीसीटीवी कैमराथी सज्ज है, सिक्योरिटी गार्डथी सज्ज है, तो आ फाइलों गायब केम थाय छे? गायब थवानुं एक कारण ए पण आवे छे के कॉन्ट्राक्टर अने अधिकारीओ ज्यारे मस्त मोटा भ्रष्टाचार करता होय छे त्यारे आवी फाइलों गायब थती होय छे। आजे आवेदनपत्र आप्युं छे अने जणाव्युं छे के जे विभागनी फाइलों गायब थई होय ते विभागना अधिकारी सामे पोलीस फरियाद दाखल करे तेवी अमे मांग करी छे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहां और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना।
अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है, तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd फेज, जेतलपुर रोड, वडोदरा। 9537683360, 971555406806। बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। गुजरात के वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में फ्लैगशिप मोटिवेशनल कैंपेन में शिरकत करने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी वडोदरा आए, जिनकी मौजूदगी में पारुल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीफाइंग माहौल देखने को मिला। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में फ्लैगशिप मोटिवेशनल कैंपेन मिशन पॉसिबल यहाँ पॉसिबल है अंतर्गत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी, एंकर कम होस्ट मनीष पॉल और हास्य कलाकार कीकू शारदा पारुल यूनिवर्सिटी आए। हजारों की संख्या में मौजूद पारुल यूनिवर्सिटी के छात्रों में कैप्टन कूल माही की उपस्थिति से भारी उत्साह देखने को मिला। हाथों में पोस्टर के साथ पारुल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनका भव्य स्वागत किया। धोनी ने स्टेज पर पहुंचने से पहले पिच पर हाथ आजमाते हुए बैटिंग भी की। इस शो को होस्ट कर रहे मनीष पॉल और कॉमेडियन कीकू शारदा ने स्टेज पर कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का जलवा बिखेरा। इन दोनों के परफॉर्मेंस से पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में अद्भुत ऊर्जा का संचार देखा गया। स्टेज पर मनीष पॉल ने कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के साथ संवाद किया और कई सवाल जवाब किए, जिसमें उन्होंने यंगस्टर्स को पसंद करते होने की बात कहते हुए सभी युवाओं को संभाल कर बाइक चलाने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने पारुल यूनिवर्सिटी और छात्रों के भविष्य पर भी बात की। धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट से लेकर जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव पर बात करते हुए युवाओं को मोटिवेट किया। गुजरात के वडोदरा जिला के सांवली तालुका में यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। वडोदरा जिले के सांवली तालुका में यूरिया खाद की गंभीर कमी सामने आने से किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सुबह से ही किसान लंबी कतारों में खड़े होकर खाद लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उपलब्धता कम होने के कारण उन्हें बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि यूरिया के साथ सल्फेट जबरन
लेने के लिए कहा जा रहा है, जिससे उनका खर्च बढ़ता है और मन न होते हुए भी अतिरिक्त खाद खरीदना पड़ता है। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से खेती का खर्च लगातार बढ़ रहा है और अब खाद की कमी ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। बस हजू नंबर आयो नहीं અને કશું ટેકવાનું છે નહીં, ખાતર થઈ રહે ના આલે એવી વાત છે। કેટલા ખેડૂતો હવે બીજી વાત એ છે કે યુરિયા લેવા જોડે બીજી 350 ની એક થેલી કોટ થેલી આલે છે, એક ખોટા પૈસા ખેડૂતને પડી જાય છે। બેરે બેરે બટકાડે નહીં પછી ખાતર ના આલે, થેલી ના લો એ એની સલ્ફરની થેલી આવે, યુરિયા જરૂર હોય સલ્ફર શી રીતે નખાય આપણે અંદર, તો એ વધારાનો ખેડૂતને 350 રૂપિયાનો ખર્ચો કોટ થેલીએ लागे છે। वडोदरा के गोत्री में पहली बार शनिदेव फाउंडेशन और रवि अग्रवाल द्वारा आयोजित गोत्री प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। गोत्री के कलानगरी क्रिकेट मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन हुआ। शनिदेव फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के परिवार की महिला सदस्यों ने पूजा अर्चना कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस टूर्नामेंट में 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक कुल 48 टीमें भाग लेंगी, जिसमें सभी खिलाड़ी सनातनी समुदाय के हैं। टूर्नामेंट के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के पोस्टर भी लगाए गए हैं, ताकि मैच देखने आए लोग इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और उनका लाभ उठा सके। શનિદેવ ફાઉન્ડેશન અને રવિ અગ્રવાલ દ્વારા ગોત્રી વિસ્તારમાં સતત બીજા વર્ષે ગોત્રી પ્રીમિયર લીગ એટલે કે GPL2 2025 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આજે વિધિવત રીતે તેનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો। વાત કરવામાં આવે તો પહેલી જે મેચ છે વીકેન્ડ 11 અને ડાયનામાઇટ 11 તેમની અત્યારે ચાલી રહી છે અને ખૂબ ચોકડા અને છગડાની જે વરસાદો છે તે અહીંયા ગ્રાઉન્ડ પર થઈ રહી છે અને દર્શકોને ખૂબ મજા આવી રહી છે। ટુર્નામેન્ટની જો વાત કરીએ તો પહેલી વખત આખા વડોદરા શહેરમાં સનાતની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ છે। તમામ 48 જે ટીમો છે તે 48 ટીમોના પ્લેયર્સ સનાતની ધર્મના જે હશે એ તેઓ અહીંયા ટુર્નામેન્ટમાં રમી શકશે। 8 ઓવરની મેચ છે। પ્રાઇઝ પણ તમે જોઈ શકો છો કે 31,000ના વિનર્સ અને રનર્સ અપને પણ પ્રાઇઝ રાખવામાં આવ્યા છે, ટ્રોફી રાખવામાં આવી છે। દરેક મેચમાં મેન ઓફ ધ મેચની ટ્રોફી આપવામાં આવશે અને ખૂબ સારી રીતના આ ટુર્નામેન્ટનું જે આયોજન, આ જે મહેનત છે અમારી આખી શનિદેવ ફાઉન્ડેશનની ટીમ અને ખાસ કરીને દિનેશભાઈ ફિટર અને અમારા જયભાઈ કાપડિયા અને તેની સાથે તમામ લોકોની આ મહેનત છે કે જેના કારણે આ ગ્રાઉન્ડ તૈયાર થઈ શક્યું છે। અને હું તમામ લોકોને આમંત્રિત કરું છું કે વડોદરા શહેરના લોકો આવો, આ મેચ નિહાળો, ખૂબ મજા આવશે। અને જે રેગ્યુલર મેચ થાય છે તે જ પ્રકારની આ ટેનિસ પર નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ છે અને તમામ લોકો ચોક્કસથી આ ટુર્નામેન્ટમાં આવો અને આ मैचનો आनंद निहाड़ो। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी राष्ट्रीय एकता यात्रा का शिनोर में स्वागत किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती उत्सव के तहत निकाली गई राष्ट्रीय एकता यूनिटी मार्च 26 नवंबर को करमसद से शुरू हुई थी और 6 दिसंबर को केवड़िया पहुंचने वाली है। यात्रा जब वडोदरा के शिनोर तालुका में प्रवेश कर रही थी, तब सबसे पहले टिम्बरवा गांव में लोगों ने भव्य स्वागत किया। साधली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में देश के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात सरकार के मंत्री जीतू वाघानी साधली के मंच पर उपस्थित थे। साधली स्कूल मैदान में सरदार गाथा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी मंत्रियों ने सहभागिता दर्ज कराई। सरदार पटेल जी ने हमेशा बातचीत करके समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की है, लेकिन जब रास्ते बंद हो गए तब उन्होंने कठोर रास्ता भी अपनाने में रंच मात्र संकोच नहीं किया था। हैदराबाद के विलय के लिए भी आपने देखा होगा, हैदराबाद के विलय के संबंध में भी जरूरत पड़ी तो कठोर रुख अपनाने में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकोच नहीं किया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कठोर रुख न अपनाया होता तो शायद हैदराबाद आज वह भारत का हिस्सा न रह जाता। और मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने भी इसी मूल्य को आदर्श बनाया। हमने दुनिया को बतला दिया है, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वालों को हम माकूल जवाब देने की क्षमता रखते हैं। यह संदेश भी हमने विश्व को दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150મી जन्म जयंती निमित्ते सारा भारत अंदर जे
ખાસ કરીને યુનિટી પદયાત્રા એની શરૂઆત કરી છે. એ પૈકીનું આણંદ ખાતેથી 26/11 માનનીય મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં આ પદયાત્રાની શરૂ કર્યા પછી આજે મેં ડભોઈ ખાતેના અહીંયા અમારી સાથે આ જિલ્લાના માનનીય ભારતીય જનતાના અધ્યક્ષ, અમારી સાથેના માનનીય કૌશિકભાઈ અને સૌ આ વિસ્તારના સન્માનની આગેવાનો, પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં પદયાત્રામાં જોડાણા છે. અમે અહીંયા સરદાર પટેલ સ્મૃતિ વન, જે અહીંયા લગભગ 1000થી વધારે વૃક્ષો જેનું આજે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું છે, એ મુલાકાત લીધી અને સાથે સૌ કાર્યકરોએ જે રીતે આ વન ઊભું કરવામાં જેમનું યોગદાન છે એ સૌને પણ યાદ કરીને આજે સરદાર પટેલ સાહેબ કે જેમણે એને યાદ કરીને આજે એમની યાદીમાં આ વનનું અહીંથી આજે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury?
वडोदरा महानगर पालिका द्वारा संचालित शिक्षा समिति की स्कूलों में आज एक साथ कई विकासात्मक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। वडोदरा महानगर पालिका शिक्षा समिति ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए 4 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कवि दुलाकाग प्राइमरी स्कूल सहित कई नगर स्कूलों में इन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। शिक्षा समिति के अध्यक्ष आदित्य पटेल ने बताया कि नियमित 100% उपस्थिति दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षा NMMS की तैयारी करने का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सके और उनके परिवारों को भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। छात्रों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में बास्केटबॉल कोचिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई है, जिसके तहत प्रशिक्षित कोच बच्चों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण देंगे। खामोशी से भी नेक काम होते हैं, मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। बरोड़ा यूथ फेडरेशनना फाउंडर रुक्मिलभाई शाह અને એની સમગ્ર ટીમ દ્વારા સતત નવા વિચારો સાથે જે પ્રકારે શહેરીજનોની વારે અલગ કોઈને કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ સાથે તેઓ હાજર થાય છે, ત્યારે આજે મને કહેતા ગૌરવ થાય છે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની અલગ અલગ શાળાઓમાં 4 નવા પ્રોજેક્ટ સાથે તેઓ આજે ફરીથી એકવાર શુભારંભ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। પ્રોજેક્ટ પ્રોગ્રેસ જેના હેઠળ દર મહિને શાળામાં નિયમિત 100% હાજરી સાથે હાજર રહેતા બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેનો એક કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। સાથે સાથે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા NMMS જેમાં બાળકો આ પરીક્ષાના માધ્યમથી શિષ્યવૃત્તિના હકદાર થાય છે અને જેના માધ્યમથી બાળકને ભણતરની સાથે સાથે તેના પરિવારને પણ એક વધુ સારી રીતે શિક્ષણ મેળવી શકે તે માટે આર્થિક સહાય પણ થાય છે। આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ તેમના ટીમ દ્વારા બાળકોને આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરવામાં આવશે। સાથે સાથે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે રમતગમતનું પણ ખૂબ મહત્ત્વ હોય છે, ત્યારે આ શાળાઓમાં બાસ્કેટબોલના કોર્ટમાં કોચ દ્વારા બાળકોને ઉત્કૃષ્ટ કક્ષાનું બાસ્કેટબોલનું કોચિંગ મળી રહે તે પ્રોજેક્ટનું પણ આજે શુભારંભ લોન્ચિંગ થવા જઈ રહ્યું છે। બરોડા યુથ ફેડરેશન દ્વારા છેલ્લા ઘણા સમયથી કોઈને કોઈ કાર્યક્રમ થકી વડોદરા શહેરના વિદ્યાર્થીઓ હોય કે નગરજનો હોય તેમને કોઈને કોઈ મદદરૂપ કરવામાં આવતી હોય છે। તેને ધ્યાનમાં રાખીને નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓમાં આગામી દિવસોમાં પ્રોજેક્ટ પ્રોગ્રેસ એટલે કે જે વિદ્યાર્થીની હાજરી એ મહિનામાં સૌથી વધુ હોય તેમને એક પ્રોત્સાહન રૂપે ગિફ્ટ આપી અને બાળકોની હાજરી વધે અને આ હાજરી વધશે તો શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ એમનું સંકુલ થશે અને આગળ બી એ લોકોનું નિર્માણ થશે। એના ભાગરૂપે પ્રોજેક્ટ પ્રોગ્રેસની શરૂઆત કરવામાં આવી રહી છે। સાથે સાથે પ્રોજેક્ટ NMMS જે નેશનલ મેરિટ સ્કોલરશિપ સ્કીમ છે એના માટે પણ અમારા વોલેન્ટિયર્સ શાળામાં આવી અને વિદ્યાર્થીઓને શીખવાડશે, જેથી કરીને 9મા 10મા માટે વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશિપ મળી શકે અને એના માટે બી આયોજન થઈ શકે। उत्तर गुजरात में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सिद्धपुर पहुंची, जहां काकोसी में आयोजित जनसभा में शराबबंदी के कड़े अमल और किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार मांग उठी। उत्तर गुजरात में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सिद्धपुर तालुका पहुंची। गागलासन गांव में स्वागत के बाद यात्रा उमरू 4 रास्ता होते हुए काकोशी गांव पहुंची, जहां मुख्य बाजार में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जैसे जैसे रैली मुख्य मार्गों से गुजरती गई, बड़ी संख्या में लोग उमड़ते चले गए। जनसभा में गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, केंद्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, विधायक जिग्नेश मेवाणी, पूर्व विधायक चंदनजी ठाकुर तथा सुभाषिनी यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने लोगों को संबोधित किया। समग्र गुजरात में लोगों जे तकलीफों छे, पीड़ा छे, दर्द छे, जे आक्रोश छे एने वाचा आपवा माटे आ जन आक्रोश यात्रानी शरूआत करी। आज एनो 11मो दिवस छे અને આજે આ યાત્રા સિદ્ધપુર વિધાનસભામાં કાકોશી ખાતે પહોંચી છે। તમે જોઈ શકો છો કે હજારોની સંખ્યામાં લોકો આ યાત્રાના સમર્થનમાં જોડાઈ રહ્યા છે। દરેક લોકોની એક જ માંગ છે
એ ખેડૂતોના જેવા સંપૂર્ણ માફ થવા જોઈએ. યુવાનોને કાયમી રોજગાર મળવો જોઈએ. ફિક્સ પગાર, કોન્ટ્રાક્ટ ને આઉટસોર્સિંગની પ્રથા નાબૂદ થવી જોઈએ. પ્રજાના ટેક્સના પૈસામાંથી જે ચારે તરફ ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે એ ભ્રષ્ટાચારીઓને ખુલ્લા પાડીને જેલના સળિયા પાછળ મોકલવા જોઈએ. અને જે ગુજરાતની યુવા પેઢીને બરબાદ કરી રહ્યા છે, જે ગાંધીનગરમાં બેઠેલી સરકાર દર મહિને કરોડો રૂપિયાનો હપ્તો લેવા માટે ગુજરાતના યુવાનોને ડ્રગ્સ ને દારૂના રવાડે ચડવા માટે મજબૂર બનાવી રહી છે. બુટલેગરો બેફામ છે, ત્યારે ગુજરાતની મહિલાઓ, બહેનો, માતાઓ આ ગુજરાતમાં દારૂબંધી સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં આવે, ડ્રગ્સની બધી સંપૂર્ણ રીતે દૂર થાય અને ગુજરાતમાં કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાય એટલા માટે આક્રોશ સાથે રજૂઆત કરી રહી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં આશા વર્કર, આંગણવાડીની બહેનો, જીઆઈએસએફના જવાનો, સફાઈ કામદાર, મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર્સ, હોમગાર્ડના જવાનો, અનેક કર્મચારી મિત્રો એ ફિક્સ પગાર આઉટસોર્સિંગ કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમનો 25 વર્ષથી ભોગ બન્યા. દરેક ચૂંટણી વખતે અને ચૂંટણી સિવાય પણ પોતાની જાત ઘસીને ગાંધીનગર આવે, રેલી કરે, ધરણા કરે, અરજી આપે, આવેદનપત્રો આપે, છતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર સાંભળવા તૈયાર નહોતી. ત્યારે આ કર્મચારી મિત્રો નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ગયા, હાઈકોર્ટમાં કેસ જીત્યા. તો આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગુજરાતની સરકારે કર્મચારીઓની વિરુદ્ધમાં જે એલપીઓનો કેસ દાખલ કર્યો એ કઈ હદે રાજ્યની સરકાર કર્મચારી વિરોધી છે એ આ ભાજપ સરકારનું વાસ્તવિક ચરિત્ર બતાવે છે. એટલે એક તરફ કમોસમી વરસાદનો ભોગ બનેલા ખેડૂતોને ન્યાય નહીં આપવો, બીજી તરફ ગુજરાતની બેન દીકરીઓ, માતાઓ, યુવાનોને દારૂ અને ડ્રગ્સમાં ખતમ કરવા, અને ત્રીજી તરફ સુપ્રીમ કોર્ટમાં કર્મચારીઓની વિરુદ્ધમાં કેસ દાખલ કરી ફિક્સ પગાર આઉટસોર્સિંગ કોન્ટ્રાક્ટને મજબૂત કરી શોષણની વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવી, આ જ ગુજરાતનું મોડેલ છે. આ મોડેલને ઉખાડી ફેંકવા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી અને અમે કટિબદ્ધ છીએ અને એના જ ભાગરૂપે जन आक्रोश रैली निकाली है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी के 647 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी न्यूज रूम से। आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।